मीडिया व्यक्ति के लिए हो सकता है, समूह के लिए हो सकता है और मास के लिए हो सकता है। और आज की तारीख में जब हम इस तरह से कनेक्टेड हैं, और मुझे 2 दिन पहले जब बताया कि भई आप एक सेशन देंगे क्या, तो मेरा वो स्वभाव है कि कुछ भी नया अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं छोड़ती नहीं, मैं ऐसे सोचती हूँ कि उस बहाने कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो जो एक स्वभाव है उसकी वजह से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इसके लिए इनवाइट किया। आप सब जानते हैं कि मीडिया कैन बी लोकल, इट कैन बी रीजनल, नेशनल, ट्रांसनेशनल. We are all aware of it. We are aware of, as media students, we are aware of audio visual and audio visual media. We are aware of out of house media. We are also aware about theatre and puppets and street plays and all forms of other media. And we are right now connected because of the convergent media, which I'm sure all of you are spending your time on. सो बेसिकली मैं जो कुछ समय है उसमें मैं जो समझती हूँ मीडिया लिटरेसी के बारे में, और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे हम जर्नलिज्म में बोलते हैं 5W1H. सो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि मीडिया लिटरेसी के बारे में मैं आप सबसे जो मैं समझती हूँ उनको बताना चाहती हूँ। तो आप में से कुछ लोग इसमें से कुछ शब्द पढ़ पाते होंगे। किसको सारे शब्द समझ आ रहे हैं? 5 समझ आ रहे हैं किसी को, कि किसी को 1, 2, 3 आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? मतलब ज्यादातर किस तरह से आप लोगों को समझ आता है? तो मेरी समझ है कि 2, 3, 4 आते होंगे, मतलब yes. हाँ, तो ये हरियाणा ही लिखा है। सारे शब्द जो है वो हरियाणा है। एक अंग्रेजी में है, एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में है, एक पंजाबी में है, एक उर्दू में है। पर क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती है, इसलिए हमें उसको पढ़ने को नहीं आता है। तो चेंज की हुई है। हाँ, तो नहीं, मैं वही हूँ, अभी मैं यहीं पे। तो आप इसको क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि आप उस बारे में लिटरेट नहीं है। सो मीडिया लिटरेसी भी उसी का भाग है कि अगर आप मीडिया लिटरेट नहीं है तो आपको जो मीडिया दिया जाता है वो आप उसको कंज्यूम करते रहते हैं, उसके बारे में समझते नहीं है। सो मुझे आई एम श्योर कि आपने सुबह से उसके बारे में बात की है कि मीडिया लिटरेसी क्या है, उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया है। मैं और जो उमेश जी अभी बता रहे थे आपको आईसीटी और डिजिटल लिटरेसी के बारे में। सो लार्जली हम 3 चीज़ों की लिटरेसी के बारे में बात करते हैं जब हम यूनेस्को का जो मिल कॉन्सेप्ट है, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। तो एक तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, दूसरा है मीडिया लिटरेसी, और तीसरा है आईसीटी और डिजिटल लिटरेसी। सो तीनों का एक अलग अलग एरिया ऑफ वर्क है और उसके फ्रेमवर्क्स हैं, उसके बारे में लोगों ने काम किया हुआ है। मैं जो बात कर रही हूँ वो खाली मीडिया लिटरेसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो आईसीटी डिजिटल लिटरेसी एक अनदर एरिया है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक दूसरा एरिया है। तो जब हम मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं तो एक यूनेस्को का दिया हुआ ये है ऑलरेडी, जो इंक्वायरी और रिफ्लेक्शन के साथ लिंक्ड है। आप में से कितने लोग जब भी कुछ भी देखते हैं तो उसके बारे में अपने आप को क्वेश्चन करते हैं? वहाँ से मीडिया लिटरेसी शुरू होती है कि भाई आप जो भी देख रहे हैं आप उसको उसके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, या जैसे आपको व्हाट्सएप पे मिला उसको फॉरवर्ड कर डालो और फिर उससे आप एक मशीनरी के भाग हो जाते हैं। मतलब क्योंकि आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस आपके में नहीं है, आप उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जब हमारे पास कुछ आ रहा है और हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके बारे में सोचे बगैर, तो हम एक अनपढ़ बिहेवियर को मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम एक इलिटरेट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो आपका डिपार्टमेंट ने जब ये ऑर्गेनाइज किया है तो उनकी इच्छा ये है, उनकी कंसर्न ये है कि आप जब भी कुछ कंज्यूम कर रहे हैं मीडिया में, और स्पेशली डिजिटल मीडिया में, बिकॉज बहुत आसान है शेयर करना, बहुत आसान है फॉरवर्ड करना। तो अगर आप कोई भी चीज़ आपको उससे एक्सेस हो रहा है, आप उसकी एक्शन में जा रहे हैं, उसके पहले उसके बारे में थोड़ा सोचिए, उसके बारे में अपनी होमवर्क करिए, उसको क्रॉस वैलिडेट करिए, उसको वेरीफाई करिए, उसको चेक कर लीजिए। अभी तो आज की तारीख में बहुत सारे फैक्ट चेक वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल हैं जो ये बताते हैं कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये गलत न्यूज़ है। सो क्रिएशन की कॉन्शियसनेस आपकी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप सब मीडिया स्टूडेंट्स हैं। आप एक नॉलेज और अवेयरनेस से आ रहे हैं, अपने
घर परिवार समाज और दुनिया के बारे में आपकी जो समझ है वो है, पर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है मीडिया लिटरेसी का। तो कौन काम कर रहा है? बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा मैं FIW1H की बात कर रही हूँ, तो मीडिया लिटरेसी पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ NCERT ने एक पूरा मास मीडिया लिटरेसी करके करिकुलम निकाला है। हमारी अनुभूति यादव मैम है IMC से, और आपने सुबह सर को सुना जिन्होंने एक बुक ऑथर की है, तो मीडिया लिटरेसी पे वो किताब है। हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में उसके बारे में काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप और मैं इसको सीरियसली लें, और अगर हम उसके बारे में लिटरेट हैं तो हम दूसरों को उसके बारे में लिटरेट करें। बिकॉज जैसे आपको पढ़ना लिखना आ जाता है तो आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें आती हैं जो कुछ लोगों को नहीं आती हैं, तो मीडिया लिटरेसी भी वही है कि अगर आप लिटरेट हुए हैं, आपको समझ है कि आपके पास जो मैसेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, कितना सही है वो, तो ये जो डिमेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और उसको हम सीरियसली लें। इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता है कि हमें इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हम सबको पता है कि हम दिन में घंटों तक अपने मोबाइल फ़ोन और टीवी और न्यूज़पेपर और सब चीज़ों के साथ लगे रहते हैं, तो बहुत सारा समय हम डाल रहे हैं मीडिया के साथ। अभी जो स्थिति है उसमें बहुत सारी पार्टीज़ हैं, उनको मीडिया के मिसयूज़ से बहुत फ़ायदा हो रहा है, जो पहले की स्थिति नहीं है। सो आज की तारीख में मीडिया की वजह से जिनको फ़ायदा हो उस टाइप के लोग बढ़ रहे हैं। हम अभी एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का स्टडी कर रहे हैं साइबर वायलेंस के बारे में, और हमारे फाइंडिंग्स कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं, सेक्सटॉर्शन हुए हैं, बहुत सारे तरह के क्राइम्स का भाग हुए महिलाएं। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो कुछ और लोग मीडिया को कुछ अलग तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये बहुत बढ़ गया है। तो जो ऑडियंसेस हैं उसमें बहुत सारे ऑडियंसेस हैं जिनके लिए ये पहली बार है, वो मान लेते हैं, मतलब कि आपके पास एक पोस्ट आई है, वो 10 लोगों को फॉरवर्ड करो तो आज के दिन में आपको फ़ायदा होगा। अभी कभी ऐसा हो सकता है क्या? लॉजिक और साइंस के हिसाब से कभी ऐसा नहीं हो सकता। बट बहुत सारी ऑडियंस है, जो मेरी माँ है वो कई बार मुझे भेजती है इस टाइप की पोस्ट, तो मुझे उनको समझाना पड़ता है कि माता जी ये मतलब आप जब उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो किसी को उसका पैसा मिल रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ फॉरवर्ड्स पे भी पैसा है। तो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर आप लोग अदरवाइज भी बात करते होंगे क्लास में, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, और बहुत सारे और इविल्स हैं जो हमें अगर नहीं पता है तो थोड़ा गूगल करिए और उनके बारे में थोड़ा अवेयर बनिए, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर हम, आप, मैं और सब लोग अगर बेटर सिटीजन्स हैं तो हम एक बेटर गवर्नेंस की बात करेंगे और उससे हमारी सोसाइटी सुधरेगी। सो वो जो ऑब्जेक्टिव मीडिया लिटरेसी का है वो एक बेटर सोसाइटी का है। खाली व्यक्तिगत रूप से हमें फ़ायदा नहीं है, एक सामाजिक रूप से भी इसके हमको फ़ायदे हैं। तो इसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं मैं जिसके बारे में बात करूँगी, बिकॉज मैंने सोचा कि बहुत सारी चीज़ें गूगल पे है, मतलब, और हम लोग एज टीचर्स अभी क्लासरूम में जो बात करते हैं उसमें स्किल्स की हम बात करते हैं कई बार। तो अगर आपको स्किल्स चाहिए, आपको उसकी अवेयरनेस चाहिए, तो आप अपने आप को भी मदद कर सकते हैं, मतलब यू कैन हेल्प योरसेल्फ, यू डोंट नीड समबडी एल्स टू हेल्प यू। तो बहुत सारे तरीके से मीडिया लिटरेसी इम्पार्ट की जा रही है, बहुत सारा मटेरियल है उसके, बहुत सारे तरीके हैं डिज़ामिनेशन के, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं ये 3 फ्रेमवर्क्स जो मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, और इसके रिसोर्सेज हैं, उसके लिंक्स हैं। सो आप लोग मतलब ये प्रेजेंटेशन भी मैं रिसर्च गेट पे मेरा जो प्रोफाइल है उस पे मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस डाले हैं, स्लाइड शेयर पे मेरा बहुत सारा मटेरियल है कम्युनिकेशन के बारे में, एकेडेमिया पे मेरे बहुत सारे पेपर्स हैं, गूगल स्कॉलर पे भी हैं, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग आपको पढ़े और आपको बताएं। मतलब सर ने मुझे फ़ोन किया तो बोला उन्होंने पढ़ा हुआ है। अब मैंने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पे किताबें नहीं लिखी हैं, मतलब मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सी पढ़ी है। मैंने कुछ मटीरियल लिखा हुआ है EPG पाठशाला के लिए। मेरी ज़्यादातर किताबें इंडियन टेलीविज़न पे हैं, और मैं इंडियन टेलीविज़न में मैंने 4 वॉल्यूम्स निकाले हैं, तो वो काम किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे खाली लार्जली 3 फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है helpfulprofessor.com करके, उसने ये फ्रेमवर्क दिया हुआ है मीडिया लिटरेसी का, जो क्रैप, बिकॉज हम लोग क्रैप बहुत यूजुअली यूज़ करते हैं वर्ड बाय सेइंग कुछ कचरा है टाइप्स,
पर इन्होंने क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, अथॉरिटी, एक्यूरेसी और पर्पस को लेके एक फ्रेमवर्क दिया है और उन्होंने बहुत काफ़ी इलेबोरेट तरह से उसके बारे में बात की है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसको आप फिर से रेफर करके ज़्यादा पढ़ सकते हैं। उन्होंने ही इसी को बहुत क्लियर जो उमेश आर्या सर भी बता रहे थे इसके पहले कि आप जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो कितनी अप टू डेट है। मतलब आज से 5 साल पहले की चीज़ देख रहे हैं आप तो क्या मतलब है, 5 साल में दुनिया बदल गई। पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बदलेगी मतलब। तो वो अभी की हैं या पुरानी हैं, अगर वो दी गई हैं तो वो राइट कॉन्टेक्स्ट में है कि नहीं, वो आपके लिए है कि किसी और के लिए है। आप जो चीज़ ढूँढ रहे हैं उसके आंसर्स आपको उससे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आप जब आप कोई किसी का लिखा पढ़ रहे हैं तो आप यूजुअली बोलते हैं, मतलब जैसे आपके टीचर्स जब बता रहे थे गुलाम मीरा देसाई ने बहुत काम किया। तो मेरी एक क्रेडिबिलिटी है एज अ रिसर्चर या एज अ ऑथर या एज अ मीडिया टीचर। तो वो क्रेडिबिलिटी कितनी भरोसे वाली है, मतलब आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा और आप मान लेंगे क्या, या आपको कोई पर्टिकुलर इंसान कुछ चीज़ें बताएगा तो आप उसको सीरियसली लेंगे। सो ये जो एडिटोरियल स्टैंडर्ड का फ्रेमवर्क है, बिकॉज हम सब मीडिया एजुकेशन और टीचिंग में काम करते हैं, तो किस किस हद तक हमने सोर्स को सीरियसली लेना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो सोर्स है वो भरोसे वाला नहीं है, या सोर्स की पहले की हिस्ट्री ठीक नहीं है। सो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब आप मीडिया का कोई भी मैसेज कंज्यूम कर रहे हैं और जिसने वो लिखा है, उस पर्सन की कितनी वो कोई वैलिडेटेड है क्या, या उसके बारे में कोई एविडेंसेस हैं क्या। सो एक्यूरेसी का जो डायमेंशन है वो एविडेंस को लेके है कि भाई आप जो बता रहे हैं वो सही है क्या, कि वो ऐसे ही कोई मतलब विदाउट एनी थॉट प्रोसेस, कोई बायस से या पर्सनल ओपिनियन से या प्रेजुडिस से बताया जा रहा है। बिकॉज हमारा बहुत सारा मीडिया आजकल ओपिनिएटेड हो गया है, मतलब वो वेरीफाइड नहीं है। बहुत सारा मीडिया कंटेंट जो हम आजकल कंज्यूम करते हैं वो व्यूज़ और रिव्यूज़ हैं रादर देन न्यूज़। सो ये जो डिमेंशन है वो आई एम श्योर आप लोग इसके बारे में बाकी सब्जेक्ट्स में भी बात करते होंगे। और आपको जो भेजा जा रहा है उसका पर्पस क्या है। जैसे मेरी माँ मुझे भेजती है कि भाई इसको 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और आपको इससे फ़ायदा होगा। उनका ऑब्जेक्टिव कोई मेलाफाइड नहीं है, पर वो जब भेज रही है तो उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि जिसने उनको भेजा है उसका कमर्शियल पर्पस है वो भेजने का, कि वो फॉरवर्डिंग से किसी को फायदा हो रहा है, या आप जब किसी को फॉलो कर रहे हो। या कल मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने शेयर किया कि उसके दोस्त ने ही उसको लिंक भेजा और वो लिंक जब उसने क्लिक किया तो उसका मोबाइल का सारा डेटा वहाँ से वो किया गया और उसके बाद उसके फोटोग्राफ्स को मॉर्फ किया गया और उसके साथ काफ़ी तकलीफें हुई। तो जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो किस लिए आपको भेजा जा रहा है, वो उसके बारे में एक ये क्रैप फ्रेमवर्क है जिसको आप मतलब जाके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप समझेंगे। हमारे यहाँ अभी तक मुझे जहाँ तक पता है एसोसिएशन ऑफ मीडिया लिटरेसी बना हुआ है। आई थिंक अनुभूति मैम जो आईएमसी दिल्ली में है वो उसका कोऑर्डिनेटर है। बट मुझे नहीं, मेरी समझ में अभी तक कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है। अमेरिका के तरफ देखना नहीं चाहिए हर बार, मुझे भी पता है। बट कुछ चीज़ें वो कर लेते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो उनके यहाँ एक नेशनल एसोसिएशन फॉर मीडिया लिटरेसी एजुकेशन है, नैमले करके है उनका, और उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। तो उसकी अगर आप उनका मीडिया लिटरेसी वीक डॉट यूएस पे जाएंगे तो बहुत सारा मटेरियल है और वो आपको मदद रूप होगा फ्रॉम बेसिक्स टू लेके वेरी इंटरेस्टिंग एंड एप्लीकेबल एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिए हुए हैं। पर उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसमें बहुत क्लियरली वो एनकोडिंग डिकोडिंग ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं और सिंथेसिस एनालिसिस और प्रोडक्शन की बात करें। बिकॉज हम कोई भी मैसेज कंज्यूम करें वो सफिशिएंट नहीं है, उसको हम एनालाइज करें और जब हम उसके पे एक्ट करें इन द सेंस ऑफ सेंडिंग इट टू समबडी और वेरीफाइंग इट, दैट इज व्हाट इज मोर फोकस्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिया लिटरेसी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मीडिया लिटरेसी लिटरेसी के वास्ते नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप उससे एम्पावर हो रहे हैं, आप उसको अपने समझ के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा एक अप्रोच है जो एनएमएल का है, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट मीडिया डिकोडिंग का है, सीएमडी अप्रोच बोलते हैं। और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली अजम्पशंस दिए हुए हैं कि भाई, एंड ये हम सब हमें पता है, फिर भी वो वापस अपने आप को रिमाइंड कराने की जरूरत है। हमें याद होना चाहिए कि भाई जो आपको मीडिया मैसेज भेजा जा रहा है वो कंस्ट्रक्टेड है, वो मीडिएटेड और कंस्ट्रक्टेड है। मतलब आप आई एम श्योर आप लोग
रिसर्च में और अदरवाइज भी ये सब पढ़ते होंगे या सोचते होंगे, तो आप जो भी मीडिया में देख रहे हैं वो किसी का बनाया हुआ है, वो ऐसे बना बनाया नहीं है। डॉक्यूमेंट्री का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सो डॉक्यूमेंट्री भी मतलब नॉन फिक्शन नहीं है इन दैट सेंस। सो वी हैव टू रियलाइज दैट कि हर एक मीडियम की एक भाषा होती है, हर एक मैसेज को एक पर्पस के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, हर एक मैसेज की एक वैल्यू है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप उससे आपको समझना है कि भाई वो किसी ने अपने पर्पस के लिए उसको भेजा है, तो और उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपके एटीट्यूड, आपके वैल्यूज, आपके बिलीफ सिस्टम्स, बिहेवियर सब बदले, और उसका इम्प्लीकेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे है, वो हमने समझना ज़रूरी है। बिकॉज कई बार जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो हम ये नहीं रियलाइज करते हैं कि हम अपने आप को बेच रहे हैं, उस मैसेज को, वो मैसेज आपको बेचा जा रहा है पर आप उसको बिक चुके हैं। तो ये जो इशू है वो समझना ज़रूरी है। एक तीसरा फ्रेमवर्क है जो यूनेस्को का फ्रेमवर्क है, विच इज़ कॉल्ड 3E ट्रिपल ई फ्रेमवर्क है। उसमें वो लोग एक्सप्लोर, एंगेज और एम्पावर की बात करते हैं, और कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से उमेश सर ने भी कवर की हैं उसके बारे में, कि भाई आपके पास जो कंटेंट आ रहा है वो कितना आप उसको आप किस तरह से उसको एक्सेस करेंगे, कितना ड्राइव करेंगे और कितना स्किलफुली करेंगे। मतलब अभी आपको बताया जाए कि भाई एक्स वाई जेड जगह पे कल का न्यूज़ है कि भाई अमेरिका में मास शूटिंग हो गया, अभी आपने आपके गूगल ट्रेल पे देखा, अब ये सही न्यूज़ है कि नहीं, तो कहाँ देखना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है। तो कोई एक न्यूज़पेपर है जिसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का कुछ डिक्लेरेशन है क्या, वो देख सकते हैं। अभी आप एंगेज किस तरह से करेंगे, तो उसको आप क्या उसमें किस तरह से आपको एनालाइज और इवैल्यूएट करना है। वो जो क्रैप फ्रेमवर्क में हमने बात किया वैसा है कि कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस टाइम पे दे रहा है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिकॉज लाइक अगले साल इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन को लेके आपको बहुत सारे मैसेजेस की बॉम्बार्डिंग हो की जाएगी, और आपको समझना है कि आप उसको इवैल्यूएट करें और क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, और खाली इवैल्यूएट करें नहीं, पर जब आप उसको किसी से शेयर करें या किसी से डिस्कस करें, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको करें और उसकी एम्पावरमेंट आप में हो। आपको डिसीजन मेकिंग जो लेनी है उसके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप एक पैसिव मीडिया यूज़र नहीं हैं पर एक एक्टिव मीडिया रीडर है, तो आप उसको एक जिम्मेदारी से उसको आप पढ़ें। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो मतलब आप लोग शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग आई केम अक्रॉस विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आप मैंने रियलाइज किया कि मुझे नहीं पता था इसके बारे में। जैसे मैंने कहा कि मैं इसलिए कई बार अग्री करती हूँ कि जब ऐसा कुछ बोलना होता है तो थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है, होमवर्क करते हैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग सुधरती है। तो एक इंट्रोडक्शन टू मीडिया लिटरेसी करके क्रैश कोर्स है, इसके 1 से 12 वीडियोज़ हैं अलग-अलग चीज़ों के बारे में। आज से 5 साल पुराना है। अरे बाप रे! ऐसा कैसा है? तो ये पहले वाले सब ऐसे ही गए हैं? वेरी गुड, माय गॉड! ये ये था कि ये भी नहीं था? अरे! हाँ, तो वो स्लाइड शो में नहीं काम कर रहा है, वो ऐसे ही काम कर रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ, सो वी okay, because if I that's what I'm saying, there's something wrong with the sharing, that's what I said. मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने पूरा बोल दिया, अभी वापस बोलने की ज़रूरत है कि चलेगा? English, yeah. So did this reach or it was not the uh, yeah, so I've talked about CRAP framework, I've talked about DMC framework, I've talked about Triple E framework. So I think you did not have the slides. That's what I've understood. So yeah, it's basically
there are variety of organizations who have come out with variety of ways of imparting media literacy. सो कुछ जो हैं वो मतलब अमेरिकन एसोसिएशन है, जिन्होंने फ्रेमवर्क दिया हुआ है, जिसको वो डिकोडिंग डीएमसी फ्रेमवर्क, सीएमडी फ्रेमवर्क बोलते हैं, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट मीडिया को डिकोडिंग की बात करते हैं, वो ज़्यादातर स्कूल के बच्चों के लिए है। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट lookSharp.org करके हैं, उस पे बहुत सारा देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन प्रोजेक्ट lookSharp.org. So if you kind of go there and look for it, and there is a lot of self-learning videos also. Similarly, there is another framework called CRAP framework, which is credibility, reliability, authority, accuracy and purpose framework. तो उसके framework में उन्होंने questions दिए हुए हैं कि भाई like whatever you are kind of reading, howsoever you are reading that, it is important to recognize where it is coming from, who is giving it, why they are giving it, who is the author of that text. Is there a evidence? Is it accurate? Because is there evidence of it, or it is just an opinion or a perception of somebody? NML का जो है वो decoding constructivist approach है, जिसमें each of us have a way of reading a media message. So if I show you a visual, each of you will create your own meaning, and the recognition that our own personal skills and beliefs and experiences will kind of impact our reading of a text. So CMD talks about or examines how people read those messages. And then there's UNESCO's framework, which is Triple E framework, where in Triple E framework, they are talking about how each of us will look at media message, and we should be kind of empowered about that message rather than simply looking at it, because it's essential to kind of realize that जो भी information, any information that you're getting can be ethically or safely and responsibly being disseminated further, and we should make decisions carefully. So here are some resources that I was suggesting that you can look at. There is a man who called Joe, who has done a kind of 13 videos on YouTube, and it's called Introduction to Media Literacy, a crash course. And it's a very interesting resource in my understanding, because though it is a old material, it's a 5-year-old material, it is talking about, and it has examples largely from America, but one can actually look at, relate to it, and use those information for analysis of any information that you have been using. Now, one of the things that media literacy also talks about complaints, because we have to realize that you consume a media is not sufficient. You also should be able to take some action, because if you kind of go back and realize that we discussed and talked about this whole idea of accessing information and taking an action, because there's a process where you try and kind of inquire about what you are consuming, analyze and evaluate the message, and then use your knowledge and awareness about that. So जैसे बताया जाता है कि when first time photography was invented, people didn't want to take pictures of themselves, because there was a belief that if you're photographed, then you lose your soul. So initially it was very difficult for people to take photographs, because nobody was ready to take pictures, because they felt that आपकी आत्मा चली जाती है अगर आपका फोटो लिया जाए. आज की तारीख में आपका नहीं लिया जाए तो लोगों की आत्मा चली जाती है ना, मतलब तो सब अपना ही फोटो लेते रहते हैं सेल्फी करके. So when the train came first time, people were not ready to stand on a platform, because they thought that it will come on a platform. So the knowledge and awareness about any medium, any information or any media is kind of dependent on your prior experiences and your understanding about that media. So it's not sufficient that you access and analyze and evaluate, but you also take an action. So here are kind of 3 websites which you can file your complaints about. Like you see an advertisement and you feel that it's not right. You need to take some action about it, or you are not agreeing with what is being shown in the advertisement. Then you can go to ASCII and you can file a complaint, and there is a procedure to it. And ASCII takes kind of Advertising Standards Council of India is an independent body, and they take complaints
for advertising. For broadcasting, you can do it to NBDA New Delhi, which is a National Broadcasters Association, where any complaint about broadcasting can be filed. I'm sure you're aware of Press Council because that's one of the oldest. For any complaint related to newspapers, magazines, you can file a complaint in the Press Council of India. So one has to realize that it's not sufficient that we just kind of merely consume messages, but we also kind of use those messages. Look at those messages very, very critically, and then try and use our prior knowledge and awareness, and then take necessary action. So why is it that a lot of times we kind of see false messages, or a lot of times there are people who take action and therefore wrong messages are stopped, but because of digital media and all, there is a possibility that that message will still remain in the digital ecosystem. So one has to realize that the process of literacy is not merely about looking. First and foremost, it's important, as I said, is to be aware that you have to be literate, because if we don't know how to read that message, the possibilities are that we'll not be able to read it, and therefore we'll not be able to kind of go in the right direction in terms of analysis and evaluation of that message. And then to kind of recognize that when we are creating any messages as media students, because as media students we are responsible citizens of future, because you will become journalist, and you can become a broadcaster, you can become a kind of advertiser. You have to realize that you have a responsibility as a creator of a message to kind of impart the message, because it's not only about kind of looking at the messages, but also at point take actions and making others aware about it, who are in your surrounding, in your families, with your friends. Discuss about messages which are not in alignment with the truth, or they are kind of false, or they are propaganda messages. So largely, I kind of shared with you three frameworks of media literacy, which one can use. All these three messages, three frameworks have a kind of resources that you on your own independently can also use for yourself and for kind of others. As I also said, you can kind of go back and look at this crash course, because it's very interesting according to me too, and they're all kind of 9 minute, 10 minute videos. So it's pretty. It's not boring in that sense, and it gives you a lot of insights what you must understand as a student of media, because as a media students, you have to be aware. It's also essential that you file complaints if you kind of come across any kind of irregular, wrong, false messages with reference to any of the media outlets. And then here are some kind of resources that I'm sure as students of media you must have been using, but still, if you are not, then you can always go back and look at them. And I'm sure as the students of media, you're aware of media and entertainment industry reports, which the FICI kind of publishes, because FICI has those reports. So that was kind of largely what I wanted to talk about. And then if there are kind of questions, because each of these frameworks are kind of pretty elaborate, and you can always, as a kind of a user, you can always go back to those resources and learn on your own and kind of make use of them for your benefit, because uh, being media literate is not a kind of example of getting a degree. It's not like a degree, because it's a continuous process. People who are misusing media will look for newer ways of misusing media, and uh, uh, those who are not kind of literate will have to kind of make themselves literate of those ways. So like today morning, there is a Indian Express news about a gynec in Mumbai who has been duped of 1 crore rupees because somebody sent him the cryptocurrency email, and he transferred the money and he has lost the money. So now nobody would have kind of, you are a gynec, but you don't understand that somebody can kind of cheat you using an email. So one has to realize that being a media literate is a kind of a forever process. It's a life learning process, and as media students, it's important to understand the kind of right ways of
complaining, right ways of looking at information, becoming critical about who is giving you what information. So as all the fundamentals of media literacy are fundamentals of journalism also, because when you are filing a story, you can't file a story because you like a xyz politician or you like an actor. You have to be kind of factually accurate and then kind of talk about it. So that is kind of largely the context that I use in terms of the session. So I'm kind of, I'll be happy if there can be any questions, because my understanding of a kind of I'm not sure, this is an undergraduate student or postgraduate student. Okay, okay. So, like as a PhD and postgraduate student, I'm sure you are what we call learn on your own frameworks, because as PhDs, आपके guide आपको डंडा नहीं मार सकते, आपको अपने आप को मारना पड़ता है. So you have to kind of recognize that there is a huge body of material out there, which has been designed exclusively for somebody to kind of become media literate. And you can and my understanding is that if you've done your mass media at undergraduate or postgraduate level, some of these things have been taken care of, because we are taught about all these things in the classroom, in journalism classes and advertising classes. So we have to realize that we have to be critical about using that information, and then use them critically, and also kind of, if required, take actions whenever it is required. So that was kind of my stand on it. I'll share this presentation on email if any of you are interested, and I'll also put it up on researchgate, as I said, because a lot of my work that I do in terms of speaking, I kind of put it up there, so it's available there for anybody to use it. So if there are any questions, you can ask me. Otherwise, that's kind of broadly, because if we can keep talking about examples on each of those frameworks and all that, but my understanding is that I've lost faith in online education, to be very honest. But it's kind of inevitable, so we all kind of do this. But yeah. Yeah. So, see, what my kind of understanding and context of this is, it's a very interesting observation and insight that you are sharing. My understanding is, see, what is happening is that what is the purpose of communication is commonness. We all want to reach out to each other. We all want to be relevant in terms of whatever we communicate. Now, what is happening is your national media increasingly is becoming irrelevant to the regional audiences. Now, what you're talking about is this U-turn, because news is always local, as we all kind of have been. Proximity is the fundamental function of news, as we all know. What happens is, you know that there is a mass shooting in US yesterday, but you don't know that there was a murder in your neighborhood yesterday. So what is happening is that, first and foremost, in my understanding, the present media that we are seeing is not objective oriented. Like, we had a kind of in a history of time when we were fighting against Britishers and we wanted them to go back, and the journalism that was taken up to use kind of media for agitation has kind of shifted now to what I call alliances. So you have a kind of national media outlets who have a regional media also. So there's nothing like national media separate and regional media separate. You have kind of alignments. You have a content sharing agreements. You have kind of people using the same media content on a syndication, and
agency exchange basis. Uh, the issues that you are talking about have largely become political. In like 1 hour back, I was talking to somebody in my campus just now, where she is sharing that her child studies in an ex school, and she, as a mother, was asked to sign a certificate that her child will not engage into any religion related practices. Now this child is a Christian child. He is eating non-veg, and another child who is a Jain child has filed a complaint against this child. And these are not young children. This is a kind of a he's in a sixth standard, so about 15-year-old child. Now, can you imagine, any of you, like, or me? I can't imagine as a 10-year-old or a 15-year-old complaining about religion in a school. Like, we all grew up in schools where schools are supposed to be secular places, and school didn't discuss religion. But where are we going now is because your media also pushes you identity as an important issue. Your media pushes religion as an important issue. And you are kind of carpeting, in my understanding, we are carpeting certain things as a, like, a lot of people can talk about a lot of things, but we are fundamentally questioning the freedom of expression. We are questioning kind of basics of basic function of media as a debate and discussion. Why do we have media? Because we want to have a kind of open forums. We want to discuss and debate. And in a society like ours, which is on constitutionally secular, if you are expecting a mother to sign an agreement that my child will not kind of harm any other student, it's disgusting. Because why should a school get into this space? And this is happening. That's like, I'm telling you an actual case. I just kind of, she's a journalist. She's a former journalist. She's far more sensitive about issues related to society. She's media literate, and she yesterday had to go to a school and sign this agreement, for which her lawyer herself told him, "Ki, bhai, you did a mistake. You should not have signed this." But she said that the school said that, "Ki, if you're not signing this, then we'll remove your child from the school." So she didn't have a choice. So she signed this saying that my child will not engage into any practices related to religion. Now, if a child carries a non-veg dabba to school, it's not a religious practice. It's a part of the living, no? That it's kind of pretty disappointing कि we'll kind of interfere and intervene to that level of 11-year-olds and 16-year-olds, where they have to be taught about what you will not talk, what you will do, how will you behave, and all that. And then obviously there'll be tremendous pressure, and it's a kind of a very well known school in Mumbai. It's not a kind of any small, like, we keep getting WhatsApp forwards about UP teachers harassing students in the class and all that. But here is an actual case about a hi-fi school in Mumbai. So what is happening is that, my understanding is that, what is happening is that, leaving the serious issues aside, we are getting into a petty politics of everything, which probably is not required now. We also have to recognize that people who made films in the past, or people who kind of published newspapers in the past, they had some ideological loading. They did it because they believed in something, like a films that Guru Dutt made, or films that or the kind of newspapers Gandhiji published, had some ideological loading. Today we are talking about everything as economics. I'm not sure if any of you agree, but like what I am seeing in last 1 month, that when I'm going and watching a Hindi film, I feel like I'm sitting in a preaching center, because they all preach. Like, there is no story. The characters start preaching you about how you should behave, what you should do, what is a good thing to do. I'm not coming and watching a film for that, but they are, I think, somewhere gone to this कि entertainment के साथ education करना चाहिए, तो बहुत seriously ले लिया उस बात को, तो उन्होंने उसको मतलब हमको सारे characters आपको वही बताएंगे कि मतलब the last that I saw is this pretty sadly done Dream Girl 2. And if any of you saw that, you would realize that the character gives you a big lecture about how we should all be behaving, and how, and that's ridiculous. Matlab, you tell us a story about a person that we will buy that, but you can't give us
how, what you should eat and where you should go, and how you, what is the right thing to do, kind of a thing. So I think somewhere either media is taking itself very, very seriously, or media does not have anything to give. So in the process of economics of it, you want to sell everything, and everything is on sale. And therefore what we are kind of, what it is happening at the cost of ideology. Because whatever said and done, I think all of us sitting listening, we all are aware about what is right and what is not. Okay, but people are kind of giving it up, or people are kind of people are kind of having their own kind of challenges with reference to their own immediate environment. Some people want to make more money, some people want more fame, some people want more vote. So it is becoming increasingly selfish, and then the societal context or that responsibility framework has gone for a toss. So that is kind of my take. So ideally, if a national media, because that's again a question, if there was a national media, because see, we all have to realize that that media was always local, because what Gandhi's newsletters or newspapers were never all India. They were always kind of probably Western India, because Southern India had its own kind of different thing. So we are so diverse, and we are so complex, and we are so fascinating as a country, that it is extremely difficult to call anything national also. That's another issue. We are struggling to make ourselves national, but the reality is that the beauty of our country is that we are diverse. And if we can't even have that respect for that ideology, that we all stand together as we are, in spite of fact that we are all different, we are losing out on the core of the fabric of this country. Because we have to realize that uh, what is like, even you can do a small exercise sitting in your room, asking everybody that is there a film or is there an advertisement that all of you know, and trust me, I have a doubt if there is one, which didn't happen 20 years back. 20 years back, because you have so many channels, your audiences are fragmented, our realities are complex. So what is happening is that that conception of so-called national media only has gone for a toss. Because if you said New Delhi says is national, is also no more relevant today, because everything has, if you have a happy Haryana day today, I don't know about it sitting in Mumbai unless I would have connected with all of you. So we have to realize that our existences are itself fragmented, and we have become so very kind of diverse. So sorry, I think echo ho raha hai. My understanding is, sir, how people construct meanings to messages is something very interesting from our context. Because in India, considering the diversities that we have, media literacy is a kind of very important and critical factor. But if we put a kind of a basics of who is giving the message, and where is it coming from, and who is responsible for that message, the realities of meaning construction is always going to be diverse. And if we can create more literature, more research evidences about why are people reading certain things in a certain way, that will be very, very useful and important. So if you have a class right now, and the same class actually sits down and does a kind of a small exercise of one common thing that all of you are aware about, and then kind of even write down how do they kind of analyze it, or how do they see that, not even analysis, just how do you kind of interpret it, that in itself will be a kind of an evidence which is worth kind of publishing. Because we all have to realize that there's so, like, you were referring to the regional language television channel book. Now that book has chapters from people who are located in that particular context, because I didn't want an NRI to kind of come and tell me about what India is. So one of the frameworks that I use as a researcher is that let people tell their own stories. Why do we have to have bank on somebody else to tell our stories? So let's tell our own stories. So the person who is writing about Punjabi television comes from Punjab and writes about Punjabi television is going to be different from a person sitting in Gujarat writing about Punjabi television. So one has to realize as researchers, because since all of you are postgraduates, you have to realize that the knowledge production in itself is also a political exercise, because there is no knowledge that is uh, ideology neutral.
it's always subjective. Though we talk about objectivity in research, the topic in itself is subjective. So whatever you're producing, which is also like a media literacy, where whom are you producing it for, and who is validating that production of knowledge from you, which is important to kind of understand. I am I understand what you're asking, but I'm not aware about any framework of inclusion, to be very honest. Because even I think media literacy is also last 20 years that they have started discussing. Though we have, like, we all have been kind of aware that there are some fundamental basics that all of us were taught when we were young. No? You're told what is right, what is wrong, how you should go about doing things, who you should trust, who you should not trust. These are all the things that we were told to us, very very subtly, may not be in a kind of a framework